I hope I'm visible and audible. Sana, Garisha are saying yes. Okay, so here's your first warm-up question. Pratham, solve this beta right now. We'll be solving this first. If we have time, then we'll take the general questions at the end. चलिए, so let us check. अब survey by Hamad Medical Corporation we are talking about, and the respondents they have claimed about this health warning messages जो cigarettes के ऊपर दिए हैं, they do not effectively communicate the extent of harm caused by smoking. सही से जितना intention है हमारा जो purpose है, it is not being fulfilled. तो यहाँ पे अब which of the following best completes this? Hence, the sale of cigarettes should be made illegal. He is not talking about that we should continue or discontinue the sale. So that is out. Second says more effective way of warning smokers should be devised. Seems good because we are talking कि ये अच्छा नहीं है. So maybe something else we should go for. So B can be the answer. Third, smokers do not care about the health damage caused by smoking cigarettes. So there is no point in displaying. Irrelevant है कि display ही मत करो because people will not be paying attention. We have to go with what is given here. Last में remaining, they notice the focus is not on those who are not noticing, but those जो कि हमारे पास focus is on those जो कि notice नहीं कर रहे हैं, not on those who are noticing. So that is also out. So yes, B is the correct answer here. चलिए, so this was a warm up. Let us come to the next. So this is your passage. Have a quick look at it, read it, and then I will move on to the questions. This is also uploaded on your Telegram main channel. And keep a note of your correct ones. Once you have read, let me know. I will move on to the questions. Kanchan has read. Others read. Chali, if you have not read, you can read it from the Telegram. I'm going to the first question here.
Do mention the question number when answering. It becomes easy for me to check. I'll disclose the answers together. First, you solve all the questions. For second, Gurpreet is the first to answer. Chaliye, third. Again, Gurpreet, first one to answer. Okay, fourth one. Third in a row for Gurpreet to be the first to answer. Chaliye, last question of this passage. And also do let me know how many of you have understood the passage thoroughly and कितनों के लिए ये बाउंसर रहा बिल्कुल समझ में नहीं आया हो. Again, first answer from Gurpreet. चलिए, so let us discuss here. Garisha, properly understood, understood. Okay, ठीक है.
चलिए, तो in short I will explain. Not a, if we talk about the level of difficulty, it is towards the easier side. एंड इतना डिफिकल्ट नहीं है ना पैसेज ना ही क्वेश्चंस ऐसे ट्रिकी सो फर्स्ट पैराग्राफ इट इज टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ दिस टीचर बोहेम मूर who is very busy throughout the day, even at one point he was working in the night as well. Second paragraph is talking about the medical toll that has been on his health because of working so much. तो इतनी परेशानी आई, डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया कि इतना काम मत करो, बट देन ही इज वरीड कि हाउ एम आई गोइंग टू फीड माय फैमिली. तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द टीचर्स, दिस टीचर है कि he has to work so much कि ताकि so that there is food on the table. And then third is talking about the that this is the situation of the teachers. They are living in a very difficult times, and even with this election, so they are hoping that something better will come off. एंड दोनों ही पार्टीज यहाँ पे उनको यहाँ पे दोनों की दोनों पार्टीज चाह रहे हैं कि टीचर्स के वोट उन्हें मिल जाएं, लेकिन जो यहाँ पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे जो डैमेज कर दिया है, तो अब दीज पीपल दे आर वंडरिंग कि क्या ये उसको डैमेज को सही कर पाएंगे. सो नोबडी फॉर बाउंसर हियर, एवरीबडी ओनली अंडरस्टूड. चलो दैट्स गुड. So which of the following, if true, weakens the conclusion drawn by the researchers? अब यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रहा है कि टीचर्स दे आर नॉट इन अ गुड सिचुएशन, बहुत मुश्किल आ रही है टीचर्स को, तो हमें उसको वीकन करना है कि नहीं, अच्छी सिचुएशन में है टीचर्स. So Trump government has cut public education funding. If he has cut public education funding, this is strengthening. इसलिए teachers they are not getting a proper salary. Trump government has belittled. Belittle is to try to show that someone is not worthy of respect. तो teachers को इतना respect नहीं देना चाहिए. This is what the government thinks. Again, this is supporting. B बोल रहा है Trump government has not done justice to teachers. So this is what the passage is saying. It has done damage. So A should be correct. Trump government believes that teachers deserve more respect. If they believe they deserve more respect, this is weakening the claim. कि यहाँ पे टीचर्स दे आर इन अ पैथेटिक सिचुएशन, गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर. कहीं भी कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो व्हाई दिस इज द आंसर. अब हमें स्ट्रेंथन करना है द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द पैसेज. पिछले वाले ही क्वेश्चन होता तो बी सी डी अगर ऑप्शंस होते तो हम ले लेते. लेट अस लुक एट द क्वेश्चन ऑप्शंस. यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास. ए बोल रहा है हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स शुड बी डाइवर्टेड फ्रॉम पब्लिक स्कूल्स टू प्राइवेट प्रोग्राम्स दैट स्टडीज शो हेल्प स्टूडेंट. तो यहाँ से पब्लिक से प्राइवेट में आप चले जाओ. उसने यहाँ पे ये नहीं कहा है कि पब्लिक से प्राइवेट फंडिंग की तरफ शिफ्ट हो जाए, बल्कि पब्लिक फंडिंग ही कम है अभी. कई सारे अमेरिकन तो दे आर नॉट अवेयर अबाउट द ब्लीक एजुकेशन लैंडस्केप. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि most of the Americans, what is their perception, what is their view, so that is also not strengthening. Recent educational educators poll मतलब teachers poll. टीचर्स के अंदर जो पोल किया गया उसमें मेजॉरिटी ने कहा कि they were more voiceless than ever before. मतलब the situation is not good, situation is bad. तो यहाँ पे C can be the answer. D बोल रहा है 63% of high school students seriously considered joining the teaching profession. टीचिंग प्रोफेशन मतलब बहुत अच्छा जा रहा है यहाँ पे, तो दिस इज समवॉट weakening the author's claim कि teachers की situation is bad. So this is also out. C will be the correct answer here. Any general questions? Please discuss it at the end. If we have time, we will discuss it there. And right now we'll be discussing only these questions that are there on the screen. चलिए, थर्ड में क्या होना चाहिए? Which of the following is not an example of the current situation of teachers as mentioned in the passage? टीचर्स की सिचुएशन दी गई है कि दैट इज वेरी बैड, तो जहां पे भी हमारे पास आ जाएगा कि इट इज नॉट बैड, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर. फर्स्ट बोल रहा है ओवर द पास्ट डिकेड द नेशनल एवरेज टीचर सैलरी इन अमेरिका हैज ड्रॉप्ड 4.7%, कम हो चुकी है. तो ये तो हमारे पास सही एग्जाम्पल हो जाएगा, विल बी नॉट द राइट आंसर कि सैलरीज नीचे जा रही हैं. सेकंड के अंदर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पे गैप बहुत ज्यादा है सिमिलर प्रोफेशंस में. लेट अस से कि दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं दो लोग, एक गया टीचिंग में एक गया नॉन टीचिंग में. तो नॉन टीचिंग और टीचिंग में काफी ज्यादा गैप है, टीचर्स को कम मिल रही है. तो अगेन सेइंग नॉट इन अ गुड सिचुएशन. थर्ड यहाँ पे हमारे पास बता रहे हैं ये पामर अ टीचर के इन्होंने देख लिया है मोर देन अ डजन टीचर्स हर एज क्विट बिकॉज ऑफ लॉन्ग आवर्स एंड लो पे.
सिचुएशन इज पैथेटिक सपोर्टिंग। लेकिन डी बोल रहा है 70% ऑफ टीचर्स, मतलब मेजोरिटी जो है, 2/3 से भी ज्यादा, in America report that their community schools were well funded and 65% said they were fairly paid. 65 again, majority is saying they are doing well. So D will be a better choice here. Chaliye. Question fourth, what should be the answer here? Most likely to follow the last paragraph. Last paragraph के अंदर उसने हमसे बात करी है टीचर्स आर वंडरिंग कि जो यहाँ पे अभी ट्रम्प ने डैमेज कर दिया है, तो अब ये दोनों जो कैंडिडेट्स हैं क्या वो उसको सही कर सकते हैं? तो समथिंग लाइक दैट शुड बी आवर आंसर, कि जो उसको कंटिन्यू कर दे। डी बोल रहा है वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ टीचर्स वर्क प्लेस एंड एंग्जाइटी इज अनरूली किड्स। Unruly kids, that is not the focus, so that is out. Or neither is there stress and anxiety because of this. Teachers are valued and trusted second only to parents. तो यहाँ तो ये पॉजिटिव बात कर रहा है, जबकि passage is talking in a negative way about how the bad the situation is. Many teachers are already thinking of going on strike. This can be the answer, that strike पे जाना की सोच रहे हैं। क्यों? Because they are thinking कि ऐसे कुछ होगा भी कि नहीं नए प्रेसिडेंट के आने से। So B can be your answer. But it shouldn't deter the spirit of teachers. Again, we cannot say going in the opposite direction. They should be optimistic. Jabki situation is so pessimistic. So that is also out. Correct answer will be B. Chale, last question here. Which of the following can be inferred from the passage? डी बोल रहा है टू टीच इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द चाइल्ड थ्रू अ सिस्टमिक फ्रेमवर्क, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि हाउ दे शुड टीच ऑन व्हाट सिस्टम दे शुड फॉलो। when we teach we must prove that we are not the idiots that the government thinks we are idiots। एक्सट्रीम आ गया हमारे पास, इसीलिए आउट। गवर्नमेंट इज नॉट पेइंग अटेंशन टू द टीचर्स, ये तो ठीक है, बट गवर्नमेंट थिंक्स दैट टीचर्स आर इडियट्स, वो नहीं है फोकस, सो दैट इज आउट। Teachers today have technological support which their predecessors didn't. Technological support not discussed, so out. The teaching profession requires a lot of commitment and resilience. Resilience, ability to withstand difficulties, and right now, teachers they are facing the difficulty, so only A can be safely inferred, and so is the correct answer here. Chaliye, so how many of you got all correct, including that warm-up question? Do let me know. And what do you feel? What is the situation of teachers? Are they well paid? And is it a respectable profession? Chaliye, again one warm-up question, then we'll move on to the second passage. Four. Archan, all five correct. Good. There are six questions if you include that warm-up, not five. Most of you at four or five. Good. Anand, full. Good.
चलिए लेट अस चेक। अब क्या क्या बोल रहा है कि सिंगापुर एयरलाइंस ने यहाँ पे एक्विजिशन कर लिया, एक्वायर कर लिया किंगफिशर को, और तब से स्टॉक प्राइसेस जो है बढ़ गई एंड इट हैज हैड अ 60% इंक्रीज इन टिकट सेल्स, वो भी बढ़ गया। अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि टू टू स्पीड अप द टेक ओवर ऑफ जेट एयर, जिसकी वजह से कि फर्दर सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाएगी टिकट सेल्स के अंदर। सो कंक्लूजन इज कि अब यहाँ पे जब ये जेट एयर को ले लेंगे तो और बढ़ जाएंगे यहाँ पे इनके टिकट सेल्स। वी हैव टू चेक द कास्ट मोस्ट सीरियस डाउट्स, मतलब जो जो वीकन कर दे हमारे पास यहाँ पे। तो यू पीपल आर कंफ्यूज बिटवीन ए एंड डी, तो पहले बी और सी देख लेते हैं। Many jet air passengers are not loyal to the airlines and would switch to Singapore after the merger. तो they would switch, तो ये तो somewhat strengthening कि वो कर लेंगे। तो you are right in eliminating this। इससे तो बढ़ सकती है उनकी, क्योंकि people they will shift to Singapore Airlines। Third is irrelevant कि he was awarded this, तो neither strengthening nor weakening, it is neutral। A और D। A बोल रहा है Jet Airways is a relatively unknown brand and has a very small turnover। Jet Airways has a small turnover, but यहाँ पे क्या they will retain the name or they will keep the name as Singapore Airlines, वो हमारे पास information नहीं है। So this is not a good choice। Correct answer is going to be D। डी हमारे पास बोल रहा है कि यहाँ पे एयरफोर्स पे देवर गिविंग अ 50% डिस्काउंट। तो ये जो बात कही गई है कि यहाँ पे किंगफिशर को लिया था इसीलिए यहाँ पे हमारे पास टिकट सेल्स बढ़ गई थी, नहीं, इट इज परहैप्स बिकॉज ऑफ दिस 50% डिस्काउंट ऑन द सेल्स। so this is weakening, it has nothing to do with the acquisition of kingfisher। तो इसलिए जेट को भी अगर ले लेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे हमारे पास बढ़ जाए। सो डी विल बी अ बेटर चॉइस हियर। चलिए come to passage 2 here, also there on the telegram। कंचन डन अदर्स। डन, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर।
Don't forget to mention the question number. Kanchan, you are answering the second one? Third one. Chaliए, last question, just four questions here. Okay, so let us check. And again, the same question. How many of you have understood it well? और कितने लोगों के लिए bouncer रहा? If you talk about the level of difficulty, so this one is of moderate level difficulty, and questions भी जो है they are of moderate level. In fact, some of them they are easy. अगर आप passage से compare देखोगे तो कई सारे easy to eliminate options दिए हुए हैं उसके अंदर. So we are talking about philosophy. So passage is obviously based on philosophy. Philosophy, just the way that we talk about uh, uh, religion, so its meaning is not fixed. कभी तो हम बात करते हैं इसको हिस्टोरिकल कल्चर्स के सेंस में कंटेक्स्ट के अंदर. सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं कि इन दैट पर्टिकुलर एरा वी हैड स्लेव्स, तो उनकी क्या फिलोसफी थी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, उस सेंस में भी बात कर सकते हैं. या फिर अब हम आज के टाइम के भी बात कर सकते हैं कि आज हमारे अंदर क्या डिजायरेबल एटीट्यूड्स हैं, उस सेंस में भी कि दिस इज द फिलोसफी दैट वी शुड स्पेंड अ लॉट एटसेट्रा. अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड. बाउंसर मॉडरेट अंडरस्टूड. ओके, फिर आगे वो यहाँ पे हमारे पास बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो हम वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के अंदर जब बात करते हैं तो एक पार्ट उसका रहता है कि नॉलेज की तरफ एम रहता है इसका पढ़ने का, एंड ऐसा कुछ जिस तरह साइंस का भी रहता है कि ऐसा नहीं कि बस जो गवर्नमेंट चाह रही है वो कर दें, बल्कि टू गेन द नॉलेज.
और कई सारे टीचर्स जो है फिलोसफी की ये बोलेंगे कि इसका पर्पस यही होना चाहिए, सोल पर्पस तो टीचिंग होना चाहिए कि पढ़ाओ आप। एंड ये नहीं कि वर्च्यूज भी सिखाएं, वर्च्यूज तो पेरेंट्स को और चर्चेस इन सब के ऊपर रहना चाहिए। वन मोर फॉर बाउंसर, ओके। सो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने देख लिया कि मीनिंग्स अलग अलग हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हमने देख लिया, किस किस तरह से देख सकते हो, और पर्पस यूनिवर्सिटी में इसका क्या है। सेकंड में बात कर रहा है कि लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल सेंस में देखें तो ये कहां से आया है, बिकॉज वी वांटेड टू प्रोड्यूस अ सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन, दोनों को मिला के, दोनों से हटके भी है लेकिन मिलके बना हुआ है। हटके कैसे, वो यहाँ पे बताया गया है कि रिलीजन के अंदर एटलीस्ट नॉमिनली डिड नॉट अपील टू अथॉरिटी और ट्रेडिशन। रिलीजन के अंदर वी अपील टू अथॉरिटी, मतलब गॉड हैज सेड दिस सो वी हैव टू डू दिस, या फिर हम जाते हैं विद ट्रेडिशन, ऐसा करते आ रहे हैं हम तो सदियों से, या हमारे जनरेशन आफ्टर जनरेशन वी हैव बीन डूइंग, इसलिए इसको करना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसलिए करो क्योंकि पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे थे, या बिकॉज ऑफ गॉड वी आर फियरफुल इसलिए। तो यहाँ पे इसलिए रिलीजन से अलग है। फिर साइंस से क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम एक पर्पस यह भी रहता है कि हाउ वी हैव टू लिव, तो इसलिए दोनों से थोड़ा अलग है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो एथिकल मोटिव्स रहते हैं, कि जो हमारे एथिक्स जो गाइड करते हैं, तो वो भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं, समटाइम्स एज टू द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, समटाइम्स हिज व्यूज एज टू द यूनिवर्स लेड हिम टू एथिकल कंक्लूजंस। तो उसको देख के यूनिवर्स को, या हमारे एथिक्स के हिसाब से हमने यूनिवर्स को देखा, या यूनिवर्स के हिसाब से हमने अपने एथिक्स को गाइड किया। और ज्यादातर फिलोसोफर्स के केस में एथिकल ओपिनियन जो है उसके अंदर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी थे, इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स भी उसके अंदर। कुछ ने किया, यहाँ पे यू कैन सी द कॉन्ट्रास्ट हेयर, कुछ का ने माना डेमोक्रेसी, कुछ ने ओलिगार्की। डेमोक्रेसी मतलब रूल इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, ओलिगार्की मतलब रूल बाय फ्यू पीपल। तो ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट कि सब लोगों के पास या कुछ में। सम प्रेज, फिर से कॉन्ट्रास्ट, लिबर्टी एंड डिसिप्लिन, आजादी दें या आजादी ना देके डिसिप्लिन में रखा जाए। सारी टाइप की फिलोसफी जो है वो ग्रीस से ओरिजिनेट हुई, और जो आज की कंट्रोवर्सी से वो सोक्रेटिस के पहले के टाइम से चली आ रही है। सोक्रेटिस फेमस ग्रीक फिलोसोफर। सो सेकंड पैराग्राफ के अंदर हिस्टोरिकल ओरिजिन्स के बारे में बात की गई है यहाँ पे, और कैसे रिलीजन से और साइंस से ये थोड़ा सा अलग है वो यहाँ पे बात की गई। और फिर यहाँ पे बात की गई कि क्या चाह रहे थे फिलोसोफर्स यहाँ पे, और साथ में ग्रीस के बारे में हमने देखा कि ग्रीस से यहाँ पे ओरिजिनेट हुई है सारी फिलोसफी। थर्ड पैराग्राफ के अंदर बात हो रही है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स की, यहाँ पे दोनों को रिकंसाइल करने की, मतलब कैसे एक कॉमन ग्राउंड्स आप ले सकते हो, सोशल लाइफ विद द अर्जेंसी ऑफ इंडिविजुअल डिजायर्स, ये चाहिए हमें। तो आई एम इंडिविजुअल पर्सन, तो मेरे अपने डिजायर्स हैं, बट देन आई एम पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, तो एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी भी मुझे देखना है कि क्या मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, दोनों को मुझे बैलेंस करके चलना है। और ये हमारे पास अचीव हो चुका है अलग अलग तरह से। जैसे जहां गवर्नमेंट है तो किसी ने कुछ ऐसा काम किया विच इज अगेंस्ट द सोसाइटी, भले ही वो उसके इंडिविजुअल डिजायर्स हो, तो उसको वहां पे पनिश किया गया। और जहां पे रिलीजन स्ट्रांग है तो वहां पे इवन देर आर केसेस के जहां पे किंग को भी वही करना पड़ा जो कि रिलीजन ने कहा, जिसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर और मेडिवल हिस्ट्री, मिडिल एजेस के अंदर। सो थर्ड पैराग्राफ के अंदर ही इज टॉकिंग अबाउट ये कि वी हैव टू गेट कॉमन ग्राउंड्स फॉर सोशल एंड इंडिविजुअल डिजायर्स, और वो कैसे हम करते आ रहे हैं। लास्ट में बोल रहा है कि फिलोसोफर्स जब इन्होंने यहाँ पे सोशल कोहेरेंस, एक साथ मिलके एज अ सोसाइटी जब हमें रहना है, तो फिर इन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशंस डेवलप किए which are obviously less dependent upon dogma than those offered by official religions. Dogma मतलब फिक्स बिलीफ, रिलीजन ने बोल दिया ऐसा करना है तो मतलब करना है। यहाँ पे फिलोसफी उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहती इतनी कि बस ऐसा बोल दिया गया है इसलिए आपको ऐसा करना है। फिलोसफी जो है एक रिएक्शन है अगेंस्ट स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म मतलब डाउटफुल। तो यहाँ पे कई सी जगहों पे यहाँ पे जब अथॉरिटी जो है वो इतना यहाँ पे ऐसे स्टेप्स नहीं ले पाई जिससे कि वो यहाँ पे पीस मेंटेन करे, तो फिलोसोफर्स उन्होंने रैशनल आर्ग्यूमेंट्स इन्वेंट किए। रैशनल मतलब लॉजिकल, एज पर रीजन। तो फिलोसोफर्स वो लेकर आए कुछ नॉमिनल ऐसे केसेस जिसकी वजह से कम सोसाइटी जो है वो एक साथ फंक्शन कर सके, देयर इज नॉट डिसऑर्डर इन द सोसाइटी। तो लास्ट के अंदर उन्होंने बताया कि जहां गवर्नमेंट्स यहाँ पे काम नहीं कर पा रही हैं तो फिर वहां पे फिलोसोफर्स आगे आए और उन्होंने यहाँ पे रीजन देने की कोशिश की कि क्यों हमको ऐसे कुछ सिस्टम चाहिए जिससे कि सोसाइटी चल सके।
Humaid, no beta, paradox is different and weaken the argument is different. चलिए, तो which of the following has led to a deep insincerity infecting most philosophy? Would you like to answer again? Some of you were not able to understand properly. I hope now the passage is clear. तो क्या आंसर होना चाहिए अब यहाँ पे? डीप इनसिंसियरिटी क्यों है? ये बात यहाँ पे की गई है हमारे पास लास्ट के अंदर। मोस्ट फिलोसफी जो है वो रिएक्शन रही है हमारी स्केप्टिसिज्म के अगेंस्ट, जिसकी वजह से अथॉरिटी जो है वो इतना कुछ कर नहीं पा रही है। तो फिर यहाँ पे नॉमिनली रैशनल आर्ग्यूमेंट्स हैड टू बी इन्वेंटेड टू सिक्योर द सेम रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट? सोशल कोहेरेंस। उसके लिए इसकी वजह से यहाँ पे डीप इनसिंसियरिटी है इफेक्टिंग इन्फेक्टिंग मोस्ट फिलोसफी। सो ये बात सबसे अच्छी किस ऑप्शन में कही गई है? Most philosophy aims at weakening the popular forces of tradition and targets dogma। एक तो dogma को टारगेट नहीं किया है, dogma पे डिपेंडेंट नहीं रहे हैं, ये बोला है पैसेज ने। एंड इट weakens the popular force of tradition, अगेन उसने weaken नहीं किया है ट्रेडिशन को, ट्रेडिशन पे इतना डिपेंड नहीं करती फिलोसफी। सेकंड बोल रहा है हुमैद एंड अदर्स, जनरल क्वेश्चंस एट द एंड प्लीज। एज अ रिजल्ट ऑफ स्केप्टिसिज्म philosophy is increasingly becoming politically conservative because of this। a common mistake that people do कि हाँ कुछ इस बारे में बात की हुई थी, कुछ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आ गए, मतलब यही आंसर होना चाहिए, लेकिन उसने रिलेशन बना दिया यहाँ पे एज अ रिजल्ट ऑफ स्केप्टिसिज्म। इसकी वजह से हुआ है? नहीं। थर्ड, philosophers are forever trying to frame rational arguments। yes, frame rational arguments मतलब they had to, जो यहाँ पे बोला गया था कि they had to invent these rational arguments। तो वही बात हो रही है यहाँ पे, to preserve social coherence। yes, social coherence की उसने यहाँ पे बात की थी, to secure the same result for social coherence। तो probably C is your answer, रख लेते हैं C को। D बोल रहा है unconscious fear among the philosophers। वो उसने बात नहीं करी है कि they are philosophers, they are unconsciously fearful। so D is also out and correct answer is C। अभी भी बी लग रहा है आपको? बी बोल रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ स्केप्टिसिज्म। आई थिंक नाउ क्लियर सना, सौम्या एंड श्रेया व्हाई बी इज रॉन्ग। इसकी वजह से नहीं हुआ है, ये तो उसने बोला यहाँ पे कि स्केप्टिसिज्म है, उसकी वजह से फिलोसफी जो है इट इज बिकमिंग पॉलिटिकली कंजर्वेटिव नहीं, प्लस पॉलिटिकली कंजर्वेटिव भी नहीं है। उसने दोनों तरह से बताया था, लिबरलिज्म भी चाहिए, किसी को चाहिए यहाँ पे डिसिप्लिन, किसी को ओलिगार्की, किसी को डेमोक्रेसी, तो ट्विस्ट कर दिया। चलिए, तो लेट अस मूव टू द सेकंड वन। अब जल्दी से, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर सेकंड? historical origins of philosophy can be traced to, okay, Sana and Soumya। अब आसानी से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हिस्टोरिकल ओरिजिन्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर बी तो उसने बात ही डिफरेंट कंटेक्स्ट में की है, रिकंसाइल करने के लिए नीड्स ऑफ सोशल लाइफ एंड द अर्जेंसी ऑफ, ये तो उसने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हम करते हैं, तो वी हैव गवर्नमेंट्स, वी हैव रिलीजन्स, और फिलोसफी भी ऐसा करता है, बट हिस्टोरिकल ओरिजिन्स नहीं करी बात उसने। डी में द प्योर परस्यूट ऑफ नॉलेज फॉर इट्स ओन से, ये तो फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में उसने कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग की बात करी थी कि टीचिंग में क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो या तो ए या तो सी, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ए हमारे पास आ रहा है यहां से, फिलोसफी इन हिस्टोरिकली यूजुअल सेंस हैज रिजल्टेड फ्रॉम अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस अ सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड रिलीजन, जो ए बोल रहा है। और सी भी आ सकता है, क्योंकि बोला हुआ है कि मोस्ट फिलोसफी हैज बीन अ रिएक्शन अगेंस्ट स्केप्टिसिज्म, तो इट हैज बीन अ रिएक्शन, तो मतलब यहां से ओरिजिन हो गया। बट देन यहाँ पे थर्ड में वो बोल रहा है मोस्ट फिलोसफी, मतलब कुछ फिलोसफी, सर्टेन पार्ट ऑफ फिलोसफी, मोस्ट नॉट ऑल, तो फिर this one is a better choice rather than third, तो फिर we will go with A and not C। तो यहां तो सभी का A आया, ओके। चलिए, थर्ड में क्या बोलोगे आप, क्या होना चाहिए आंसर? Which of the following is true about philosophy?
इन द फर्स्ट लुक इट लुक्स अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम ऑप्शंस देख लो, its ethical connotations have no political significance. It has political significance. उन्होंने यहाँ पे it is part of that. तो A तो हमारे पास एक्सट्रीम हो जाएगा, इसलिए आउट. कॉस्मोलॉजिकल एंड एथिकल थ्योरीज आर क्लोजली कनेक्टेड. अब कॉस्मोलॉजिकल क्या कॉस्मस के बारे में बात की है कहीं पे उन्होंने. फिलोसफी इज नॉट अ मैटर इन विच ऑफिशियल अथॉरिटीज हैव एन ओपिनियन. एक्सट्रीम हो गया कि ऑफिशियल अथॉरिटी की कोई ओपिनियन नहीं होती है. अब यहाँ पे रिलीजियस डॉगमा वगैरह को उन्होंने यहाँ पे ये तो बात की है कि डिपेंड नहीं कर रहे हैं, या गवर्नमेंट वीक है तो फिर फिलोसोफर्स आगे आए, लेकिन अथॉरिटी की कोई ओपिनियन नहीं है, ऐसा कुछ भी बात नहीं की गई है, सो आउट. डी बोल रहा है इट टॉट मेयर स्केप्टिसिज्म. स्केप्टिसिज्म के रिएक्शन में इट अराइज, ऐसा नहीं है कि इट टॉट मेयर स्केप्टिसिज्म, तो इसलिए दैट इज ऑल्सो आउट. सो करेक्ट आंसर शुड बी बी. लेकिन बी आया कहां से, एलिमिनेशन से तो हम देख सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर आइडियाज. आइडियाज पे ध्यान दिया करिए, वर्ड्स पे ध्यान मत दिया करिए. अगर आप ये देख रहे हो कि कॉस्मस के बारे में तो उसने बात ही नहीं करी है, तो दैट मीन्स इट शुड बी आउट. डी काफी सारे लोग ले रहे हैं. डी के अंदर मेयर स्केप्टिसिज्म, मेयर सिर्फ इस पे, सिर्फ स्केप्टिसिज्म पे नहीं है. यहां पे एक मेजर पार्ट तो आप बोल सकते हो, लेकिन सिर्फ नहीं है, इसलिए डी इज आउट. बी, हाँ कॉस्मोलॉजिकल कहां से आया है, कॉस्मस मतलब यूनिवर्स. यहां पे ये वाली लाइन देखो सेकंड में, समटाइम्स एथिकल मोटिव्स influenced the philosopher's views as to the nature of the universe. Universe, cosmos. Sometimes his views to the universe led him to ethical conclusions. So universe and ethical theories are closely connected. Yes, कभी ये उस पे कभी वो इसके ऊपर डिपेंड, so that means they are related. चलिए लास्ट क्वेश्चन, लीस्ट लाइकली टू एग्री. What should be the answer here? Knowledge is the sole purpose of university teaching. This he has discussed in the first paragraph के last sentence में कि teachers ये बोलेंगे, तो ये तो हमारा नहीं होना चाहिए. Most type of philosophies were invented by the Greeks, तो ये तो है ही, उसने बोला ही है. I think second paragraph के अंदर last sentence में उसने ये बात कही थी. So that is also there. Almost all types of philosophy were invented by the Greeks, तो ये भी दिया हुआ है. A. Many teachers of philosophy would say that knowledge should be the sole purpose of university. दोनों हमारे पास आ चुके हैं, A और B. सो दोनों नहीं है, तो अब या तो C या तो D. D तो बिल्कुल आराम से एलिमिनेट हो रहा है. द वर्ड फिलोसफी लाइक रिलीजन इज यूज्ड इन टू सेंसेस, ये तो फर्स्ट लाइन के ही अंदर दिया हुआ है, तो बाय एलिमिनेशन C बच रहा है. प्लस इज डिटैच्ड, ये नहीं कहा है कि इट इज डिटैच्ड, डिफरेंट तो है लेकिन डिटैच्ड नहीं है, क्योंकि यहां पे उसने पूरी बात करी थी. involved political consequences, और यहाँ पे some valued democracy, others oligarchy, some praise liberty, others discipline. प्लस जब यहाँ पे गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो they came forward for social coherence. So that means यहाँ पे हमारे पास C is going to be the correct answer here. चलिए, let us do a few paragraph based questions before ending. A few bonus questions.
सौम्य बिटवीन ए एंड सी आप देख लो तो सी इज क्लियरली डिफरेंट व्यू। ए को तो उसने फिर भी साइट किया हुआ है वहां पे, लेकिन सी तो बिल्कुल ही क्लियर हमारे पास दिख रहा है। मतलब सी नहीं होता तो मे बी वी कुड हैव सेड कि ये टीचर्स का व्यू हो सकता है ना कि ऑथर का, लेकिन जब यहाँ पे ऑथर ने बोला हुआ है कि इट हैज पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, तो फिर यू कैन नॉट सी। अगर आप ए ले रहे हो में तो मतलब सी आप बोल रहे हो कि इज नॉट द आंसर, तो इसलिए। चलिए, यहाँ पे चिंकी मिंकी के बारे में बात हो रही है। मिंकी के टाइम तो 12% बढ़ रहा था, चिंकी के टाइम पे 9% हमारे पास एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो वो बोल रहा है कि शी इज, चिंकी जो इज अ बेटर, इज बेटर बिकॉज शी हैज बीन सक्सेसफुली ब्रिंगिंग डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। 3% कम कर दिया, इसको हमें वीकन करना है कि शी हैज ब्रॉट इट डाउन। फर्स्ट बोल रहा है हमारे पास कि हर साल ही कुछ ना कुछ बजटरी एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। वो तो पिछली बार भी इंक्रीज हुआ था, लेकिन इनका उतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना मिंकी का हो रहा था, तो इसीलिए ए इज रॉन्ग हेयर। बी बोल रहा है रेट ऑफ इन्फ्लेशन 9% था पहले, अब था 6%। जब 9 मतलब 3% कम हो गया रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो यही 3% डिक्रीज हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। 12 से 9 आ चुका है, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन एंड नॉट बिकॉज चिंकी इज डूइंग गिविंग अ बेटर परफॉर्मेंस। सो बी कैन बी द आंसर। थर्ड यहाँ पे बोल रहा है कि इन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स कि जिसमें कि उनके पास दे विल बी लिविंग सिंपली, दे विल नॉट बी स्पेंडिंग टू मच, वर प्रपोज टू कर्टेल, वर प्रपोज। अब रिजल्ट्स पता नहीं, और वो भी हमारे पास आए हैं मिंकी के टाइम पे, सो दैट इज आउट हेयर। फोर्थ बोल रहा है सॉ एन इंक्रीज, ये तो बात कर रहा है रेवेन्यू की, जबकि आर फोकस इज ऑन एक्सपेंस, सो दैट इज ऑल्सो आउट। सो बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। Chali, with this, I will be ending the session. Any questions now that you have, you can ask, plus your score total. So I think 5 or for 9 plus 3, 12 questions. So out of these 12, कितना रहा आपका score? Any questions? Otherwise, you can sign out. We'll be again meeting soon. And best of luck for your preparation. And yes, happy Diwali in advance, because I don't think before Diwali now we are going to meet. So enjoy your Diwali, but just for 2 or 3 days. Gurpreet, 10, just two wrong. Good, Gurpreet. Aman, 11, 9, 7, 10. Okay. So probably Aman Tyagi is at the highest, 11. Kanchan, getting your answer now. Thanks, Shreya. Thank you, Aman. Any suggestions you have for my upcoming sessions? So you can give me those suggestions. What you would like me to take? Welcome, Garisha. Chali, nothing else coming up. I think I too should be signing out. So those who are still here, finally, goodbye.